A huge Gurpurab gift to farmers. The Prime Minister has announced his government will be killing the 3 farm laws. In an emotional message, the Prime Minister apologized to a section of the farmers for not being able to convince them about the benefits of the reforms. It's been 15 months since the farmer agitation began, and the Modi government has finally decided that enough is enough. This is a battle they no longer believe is worth fighting. For 15 months, they were out on the streets with one demand. For 15 months, they toiled away from their homes for their rights. And on the auspicious occasion of Gurpurab, Prime Minister Modi handed over this gift to the Annadata of the country. हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है. Prime Minister Modi, in a completely surprise announcement, conceded that his government couldn't convince the farmers and hence decided to withdraw the farm laws. हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए. Along with this message was an appeal to our farmers to return home and to end their protest. अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है. अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे. Minutes after the announcement, farmers celebrated. But there were others who felt that this alone wasn't enough and their fight will continue. ये आंदोलन तो जब खत्म होगा, जब पूरा संयुक्त मोर्चा संतुष्ट हो जाएगा, देश का किसान संतुष्ट हो जाएगा और ये कानून वापसी हो जाएंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा. ये अभी 4-5 चीजें हैं और ये बैठ के ही बातचीत होगी. ऐसा नहीं कि फैसला वंश सुना दिया और किसान ऐसे ही चला जाएगा. A section of farmers was not happy with the farm reforms. Secondly, even government sources has said that the agitation was being used by certain sections like ISI and even Khalistanis. And last but not the least, Prime Minister has taken the 6 sentiments in his decision because no other way was working as of now. Ahead of the UP elections, the move could be a game changer for the BJP, particularly in western Uttar Pradesh, where farmers had openly slammed the government over the farm reforms. ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था. But the biggest political takeaway for the BJP, the decks are now cleared for a seat-sharing deal with Captain Amrinder Singh. The former Punjab Chief Minister spoke exclusively to India Today and thanked Prime Minister Modi and Amit Shah. फैक्ट इज कि प्राइम मिनिस्टर ने किया है और उनकी गवर्नमेंट ने किया है और हम उनके बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने किया है. मैंने कह के आया था प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कि आप ये किसानी मसला जब ख़त्म होगा, हम आपके साथ हम अपनी पार्टी बनाएंगे और आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे. और वही बात है, बार बार हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद तो नहीं अपना मन बदलते कोई इस इतनी बड़ी बातों पे. Jai Kisan chants echoed in the air, but the opposition also used the opportunity to pat themselves on the back and also reminded the government of all the slandering that farmers faced. आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला. With Milind Sharma and Kumar Kunal, Bureau Report, India Today.